नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दलित साहित्य और विमर्श पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दलित साहित्य की परंपरा, उसकी अवधारणा, उसका मूल, उसका उद्देश्य, इन तमाम मुद्दों पर वे साहित्यकार विचार रखेंगे जो लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। दलित साहित्य की या वंचितों के साहित्य की जब बात आती है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक लाइन खींच दी गई, एक रेखा है जो तय करती है कि दलित साहित्य और साहित्य में दलित ये विमर्श कैसे हो, कौन ये विमर्श करे, इसके क्या पहलू हों, इसकी अवधारणा क्या हो, किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, ये कौन तय करेगा। ये वह तय करेगा जो भोग रहा है, या वो तय करेगा जो समान अनुभूति रखता है, या वो जो केवल संवेदनशील होने का दिखावा करता है। एक लंबा विमर्श है। साहित्य हमेशा समाज की संवेदनाओं को पकड़ने का काम करता है। साहित्य हमेशा समाज में घट रहे सत्य को जांचने, परखने और उसे प्रस्तुत करने का काम करता है। मैं बड़े सम्मान के साथ आप सभी की अनुमति से इस सत्र को आरंभ करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम की, इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के एनोक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा के महत्वपूर्ण अतिथि वक्तागण आदरणीय कल्याणी ठाकुर जी, शिवराज सिंह बेचैन जी, लक्ष्मण गायकवाड़ जी और पी शिव कामिनी जी को। आप सभी अतिथियों के साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी को आमंत्रित करता हूं, वे पधारें और हमारे इन वक्तागणों का, अतिथियों का स्वागत करें। तब तक मैं हमारे इन वक्ताओं का, अतिथियों का परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सर, इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय के इनोक। आप प्रख्यात तेलुगु लेखक हैं। आपकी 150 से अधिक कविताएं और कहानियां, 9 उपन्यास और 30 नाटकों के अलावा साहित्य आलोचना और बाल साहित्य की कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ कल्याणी ठाकुर जी हैं, प्रख्यात बांग्ला ललित लेखिका हैं तथा कविता में आपकी विशेष रुचि है। अब तक आपके 5 कविता संग्रह, 1 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 1 आत्मकथा तथा उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आदरणीय शिवराज बेचैन जी हमारे बीच हैं। आप हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सेवाएं देने के बाद हाल ही में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी अभी आप सेवाएं दे रहे हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य सृजन के साथ में आप विश्वविद्यालय में उसके संचार का कार्य भी कर रहे हैं। हम सम्मान से आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय लक्ष्मण गायकवाड़ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ में महत्वपूर्ण लेखक हैं। विमुक्त और घुमंतु जनजाति अधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आप हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पी शिवकामी जी हमारे बीच में हैं। तमिल लेखिका हैं, उपन्यासकार, निबंधकार, कवि और सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने में आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आप सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पास लगभग 90 मिनट का समय है। संचालन सूत्र आपके हाथों में है। आप अगर अनुमति देंगे तो लगभग 10-12 मिनट के वक्ता के बाद में मैं समय का ख्याल दिला दिया करूँगा, वरना आप जैसा सत्र संचालित करना चाहें। थैंक यू। Friends, I thank Sahitya Academy for inviting me to this program. I am happy to see a great personality, Professor Balan is here, and also Vice Chancellor of the Vijayanagar University, Professor Kattamani is here. So many great people are here, and I am grateful to them for their attendance, which I love immensely. Today's speakers, Madam Kalyani Thakurji,
She is from Bengal. She will be talking in Bengali, or in Hindi or English, whatever it is. And Saroj Singh Bechan is a Hindi writer and a great personality. Lakshman Gaikwad is a known Marathi writer and an activist. His book was translated into 16 Indian languages. Wow. Dr. P. Sivakami, an IAS officer turned writer and a social activist, including social service. The very talented people are on the panel, and I'm happy to chair this session when the stalwarts like these four people are here, and I'm grateful to them for allowing me to be the chairperson. Dear friends, we should understand the meaning of the theme. The theme is Voices from the Margin, the Rise of the Oppressed. We should understand this first. Margin, any child would be knowing, margin of a notebook. Margins are supposed to be blank, while the page is expected to be full. Your writing is on the main part of the page and not on the origin, not on the margin. Margin supposed to be vacant, without any writing on it now or ever. Not even the forehead of the margin is endowed with any Brahmalipi. It is allowed vacant. The part of the theme is rise of the oppressed. Oppressed means people, oppressed people, and their rise. The rise in literature, not in social aspect as such for our concern here. People remained oppressed for centuries, had made their voice heard, made their presence felt, and claimed their share secured in all spheres of human endeavors in India, only in India, because these people are only in India and nowhere else. We are those people. We are those oppressed people. In fact, I am from that oppressed section. Though we live in different parts of states and called by different names, what is the common feature or quality about these people? The only quality is untouchability and the poverty that was affected by this untouchability. Why these people were called untouchables? By their habitations. They have not selected their habitations. They were given those habitations. They were forced to live in those places. Their poverty, their ignorance, their illiteracy, the near inhuman life they were forced to face in a society, and they lived like this for centuries. What was the reason for this peculiar situation? Panchama Varna of Indian social system, paradoxically a Chaturvarnya system of our way of life. The necessity of Indian nationalism made us an important milestone in the rise of the suppressed. To get independence from British colonial rule, we were forced to show that Indians are united, Indians are one, and Indians will remain one forever. This attempt was a political motive, not social. To show the unity, the untouchables were roped into the mainstream of Indian life, apparently not exactly what it was.
we were to be taken for granted. We were treated as, we were not treated as one with the other four. We were separately treated, though Indian nationalism was an expected goal. To consolidate the oneness, we were given promises. To keep the promises, the constitutional provisions were created, consolidated, and sustained. So we were acquired equality with others on paper, liberty in all aspects, justice along with others notionally. Both those who supposed to be oppressed, suppressed for centuries were not able to realize the effect of these provisions. They did not know what exactly is written in the, either in the constitution or in the expressions of the political leaders. Due to English education, we understood the provisions of reservation expressed in 1935 India Act. Through reservations, some could acquire the social values in full, others half, yet many with marginal benefits. The age-old dogma was not willing to yield, not willing to allow these sections to be one with them, their equals. The centuries of dominance was not diminished, will not diminish so soon or so suddenly. In the process, the Dalits claimed equality with others in many fields, trying to achieve it, trying to get it, and yet to realize it. And yet there are people who had to ascertain their position even when it was given to them. For them, the literature paved the way. Besides social awakening, political necessity, and the need of the hour of the politicians was in a way tried to give way to these people to come up. Instead of this social, political, and cultural ethos, Dalit literature in the whole of India had awakened the multitude of our Indian population, not only Dalits, even non-Dalits also. Initially, Dalit literature was the writings of the Dalits who could write. The Dalit literature was literature by Dalits, for Dalits, and of Dalits initially, as we call democracy. The ultimate is to get relief from the pain, anger, and agony that was given to Dalits by social, cultural, historical factors. Initially, our people wanted to retaliate, retribute, fight against the system, though they are trying to give scope for rise. From the sufferings of the Dalits, surged out the produce in the literature which tried to cajole the suppressed people, Dalits. Later it claimed values of freedom, values of equality, values of liberty and justice to the Dalits. So, the Dalit literature that was written in the beginning, very beginning, it was only requested, it was in the form of request for the society to accept them as people with
life, blood and sweat. They requested for equality, for liberty, for freedom, for justice. These values are not bestowed on the suffering masses when they are requested. They must be ascertained. They have to claim. They have to get them to their fold. Later on, the literature started demanding these values for the rise of the people of Dalit origins in their Dalit literature. Finally, they wished to reach a point where they could be in a position to grab the riches, values, and power. Without power, without values, without riches, the people of Dalit origin would never come up in life. In India, as elsewhere, power means economic power. It would be possible to achieve it through the political power only in an independent situation like this in India. The political power in India had always been in the hands of the rich, not with the people, though we are equal with anybody with our votes. Everybody had one vote only. The Dalits had to get the economic power through political power, which is in the hands of the rich. That is the paradox of the situation. That is the problem of the situation in Indian situation. This is the crux of the problem. This is the danger of the situation. This is where the literature started fighting. This is the crossroad at which that is stand. Which way to go? Where to settle? How to gain and serve? How to gain and serve and survive and get service? Dalits are aware of the social conditions. Many of the Dalit writers intentionally wrote the miserable lives of their brethren face in our unequal society. And sometimes these writers write the unpleasant past they had and the way in which they were driven to the fringes. Later they started writing about the awakening needed. The awakening which was needed has to be taught. How could we get this awakening? This awakening we could get only through education. Not only education, not all are educated, through hard work. They were doing this long back. They were in the field doing hard work, but never got their hands on the riches. Through suffering, these people faced a peculiar situation to survive in the world, forgetting age-old habits that ruined the lives of our people for the ages. Now the rise of the oppressed reached such a place from where they could demand their share of power, share of strength, share of representation, share in every sphere. They have to share all that along with others in an independent India. As such, Dalit literature is the literature that treated all with love and love alone. Dalit writers now write about love, write about equality, write about so many values, and await to receive this love, these values, this system of society,
this political awareness, this economic need from all the brethren surrounded in our society. Our Indians, our people of one India, where is this India? This India should provide what is needed for the upliftment of the Dalits. Dalits trying is one section, and others allowing it is another section. These two sections should meet for the survival, better survival of the Dalits. In this situation, Dalit writers awake Dalits first to claim their place of honor, which is due to them. And then they tell our brethren to allow only for their safety, not for the safety of the Dalits. It's only in your interest. You should allow these people to live like humans, not in human treatment. At the same time, Dalit writers tell non-Dalits to tolerate the Dalits' upsurge response. If the non-Dalits start fighting against Dalits when they claim their respective honor, the problem will be continuous himsa in the country. That's why Dalits should fight for their honor, and at the same time, non-Dalits should allow the fight for Dalits to get their place of honor. This is both sides. If one is not allowed or one is not absent, there will be crisis. If you cannot tolerate the rise of the Dalits, the oppressed, the 80% Indians are the losers. The 20% of the Dalit power is not used to develop the country. Ultimate losers would be the 80% of the Indian population. When the non-Dalits are ready to accommodate the claims of Dalits, it is their present duty to awake, arise, as someone said, and stop not until the goal is reached. The fraternity is claimed. And not only claimed, the fraternity is owned. Instead of hatred, anger, ill treatment, we should learn to love and be loved for the benefit of not Dalits, but the non-Dalits masses of India. Love is the final goal, to be happy in the country. If you hate, you are hated, and you will be ruined, either it is Dalits or non-Dalits. If Dalits hate, Dalits are likely to be spoiled. If non-Dalits hate, non-Dalits are likely to be losers and likely to be. The poor had nothing to lose. If they fight against the majority, these people with so much of power, physical power, they could achieve anything. That's why the non-Dalit community of Indian life should allow these people to claim their place, to hold their place, to live like others. When only the country will prosper. You should love the Dalits and receive the strength of their work for the benefit of the non-Dalit communities. You should treat the Dalits as brothers and give the brotherhood to get the universal brotherhood of the society in India. We have no brotherhood now. We have to get it. To get it, you should love these people with intense care. Now, Dalit literature had reached a stage where in it would treat all humans as equals. This is the UNO declaration. All humans are equals. Not in India only, the entire world,
all humans are equals. Humans means men and women. All men are not equal. All humans are equal. The future of Dalit literature would be the only literature as it contains not hatred, it to present and project fraternity instead of enmity. It would combine all people instead of divisions, and it would create one varna instead of 5 varnas, and it would one class instead of multitude of classes, and it would be created a country of human beings who are human, instead of either suras or asuras or devatas or rakshasas. All are men, equal and equally eligible for anything in a country of ours. For future Dalit literature, Dalit literature would be the only literature as it would be only one to protect the human and preserve the humanity, best of it in India. Let the brotherhood of all Indian human beings prevail in its correct perspective. Let Dalit literature save men, save Indians, save humanity for the future, where it will be successful and gainful only through love, which can't divide anybody for any reason, and without any divisions, we survive well, survive richly, survive as valued human beings in a cluster of inhuman situation in the world. We can fight for anything in the world only with the help of the Dalits. Without their participation, India will be nothing. Let the Dalits be the final goal of the Dalits would be to assimilate, mix, live with others as brothers would live. Let the others allow these people to live as brothers. Then only India would be happy place to live in, and we will be happy to settle here without any divisions. Thank you very much. I am very happy to be with you, and we will introduce people. Right. Thank you very much. All the best to you. Those who are here, my friends, I thank you so much. Thank you. Professor Balan, thank you very much. थैंक यू सर. हमारा जो संविधान है वो भी न्याय, समता, समानता, स्वतंत्रता और उस सबसे आगे बंधुता की बात करता है. मैं अब सम्मान के साथ में कल्याणी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे पधारें और अपनी बात करें. वी हैव 10 मिनट्स टू. Honorable Chairperson, my friends of Dalit writing, Shiva Kamiji, Gaikwad ji, and Mr. Saroj ji, and respected dignitaries, audience, I am very grateful and I am thankful to Sahitya Academy to give me these opportunities here to say something about Bangla Dalit literature, Bengali Dalit literature. We can say the starting of Bengali Dalit literature from Motua religion movement after Charyapad. If we read Motua literature, that is the biography of Thakur Harichand, 1812, is Sri Sri Hori Lilamrita written by folk poet Tarak Chandra Sarkar. This book is written in poetic form
and he mentioned the Buddhist philosophy and Motua philosophy is similar. Buddhist materialistic ideas is similar to Harichand Thakur's philosophy. We can see the socio-economic condition and the surviving of Dalit untouchable of undivided Bengal. A Dalit education movement was started from the period of Harichand Thakur and his son Guruchand Thakur in Bengal. Bengal Renaissance is very proudly mentioned the name of Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Chandra Vidyasagar and many others great men. But in Bengali history, there is no mention of the education movement of Harichand and his son Guruchand Thakur. Dalit literature is writing these types of history. The name of poet Tarak Chandra Sarkar and the poet Mahananda Haldar, who is the writer of the biography of Guruchand Thakur, Sri Sri Guruchand Chorit, is not mentioned in the history of Bengali literature. It was not necessary to write Dalit literature by us if these histories were available in our history book or our literature history. In case of the privileged, educated, upper caste, people has the right to write the book, and we noticed their denial to show this unspoken history and the dark side of the society. The upper caste educated people had the responsibility to say about the Dalit lives, like Mahashweta Devi, Tarashankar Bandyopadhyay and other writers. In their literatures comes out of their sympathy, but they do not try to represent the Dalit and Adivasi to say about their own history, their pain, their occupation, their society, and their upliftment from their present conditions. They write the history of their great men. They write about Harichand Guruchand, Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Periyar Ramaswamy Naikar, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, Mahendra Mahapran Jogendranath Mondol, Rai Charan Sardar, Panchanan Burma, Mahendra Karan, and so many other people. After Maharashtra Dalit Panther movement 1972, Bangla Dalit movement tried to write the history of Dalit great men, and new form of Dalit literature started from the end of 1980s. Bangla Dalit Sahitya Sanstha started its journey from 1992 after the suicide of Chuni Kotal, the Lodha Sabor girl of Vidyasagar University. She committed suicide on 16th August 1992 after repeated humiliation by her university professors. The mouthpiece of Bangla Dalit literature is Chaturtha Duniya, published from 1994. I published and edited a wall magazine named Nir Ritupatra from 1994. But after some days, it takes the shape of a little magazine. There are so many special issues of this publication, like folklore, folk drama, reservation, refugees, drinking water, loneliness, stories of Aborigine languages. And from 2011, we are publishing the Dalit women writings, like Dalit women, poetry of Dalit women, short stories of Dalit women, translated writings of all India Dalit women's, Dalit women's writing about Ambedkar, essays of Dalit women, short autobiography of Dalit women, various writings of Dalit women, and Motua culture of Dalit women. Everybody knows the resistance of a Dalit writer, but Bangla Dalit writings
past 3 decades, and a lot of strong writers present their strong writing, and most of them are internationally well known. You know the name of Manoranjan Bapari, Manohar Mouli Biswas, Jatin Bala, Nokul Mallik, Kapil Krishna Thakur, Shamal Kumar Pramanik, Dhurjyoti Nashkar, Bimalendu Haldar, Sunil Kumar Das, Manju Bala, Lili Haldar, Kanon Bodal, Jutika Biswas, Shukla Biswas, Ishita Rai, and so many. I tried to insist these women writers to write critical writings. I observed that Dalit people are more interested to read critical writings than creative one. It is very interesting that so-called Bhadralok writer denied from the very beginning that there is no casteism in Bengal and no question of Dalit literature is there. In northeast zone and eastern zone, so many Janajati is there, and each and every of them have different culture. So if they have got the opportunities, they can show their creativity and their best, as they are best. Now Dalit Sahitya Academy formed by West Bengal government, but I don't know how the literature will developed by the government sponsorship, as the Dalit literature formed against the institution. But if the institution acquired the literature movement, I think then the Dalit literature lost its characteristics. One of the poets said first opening day, what a wonderful performance of the Adivasi yesterday. Now I think we are Adivasi. This type of mindset up by our renowned poet, the word Adivasi is not an abusive word, I think, and their civilization is we are proud of the civilization, and it is very primitive civilization. Most of the so-called Bhadralok people don't know the name of Ashwini Gosai, the great lyricist of Hori Sangeet. Tarak Gosai, Vijay Sarkar are the great lyricists. I listen, Bangladesh Bangla Academy published the monograph of Tarak Chandra Sarkar and Vijay Sarkar, but so many works are pending in this field. The writing and speeches of Dr. B.R. Ambedkar should be translated into all Indian languages, because literature and poetry should come out from you and me. The definition of literature and pattern is changed now. Basically, Dalit literature changed the dimension of literature, and it's the voice of the masses. Let arise them, and more space is required for them. From the writing of Dr. B.R. Ambedkar, we learn how he counters the Indian Shastras and also Indian histories, Buddhism, socio-political features, and many more. I don't know Sahitya Academy can publish the full volume of Ambedkar's writings into all vernacular languages. I request them to do the novel works, and because a lot of translated personalities are with Sahitya Academy. Literature is not the emotion, but the intellect. Actually, I am an editor, not only editor, I am a poet also. I can't lose the opportunity to read poetry. We will be happy to hear one poem from you, Madam. Please read. Thank you so much. Thank you. Can I read Bengali on and then? Actually, I represent my language, own language. Then I will read the translate. I will short two poetry only.
আঁধারেও মেয়ে, যে মেয়ে আধার গনে তার কথা বলে দিও জ্যোৎস্নার কানে, যে মেয়ে ঘরের কোণে জোনাকিও তার কথা জানে, যে মেয়ে শব্দ ভাঙে হরিণেরা তার বন্ধুজন, যে মেয়ে বৃষ্টি ভেজা মেঘ জানে তার অভিমান, যে মেয়ে সাঁতার কাটে প্রতিকূল জলে তার পাল ছেড়ে না কোয়াশ্বিনের মেঘে ঝড়ে, যে মেয়ে বাটনা বাটে শিল নোড়া তার সহচরী, মশলা জানে তার ভাষা আদা লঙ্কা জিরে পোস্তকারী। চমৎকার মনে হয় কঠিন মেয়েটিকে, ঘাম মুছে তুলে নেওয়া পুরনো জোয়াল সহ আঁধার মানিকে। I will read both English later on. My second poetry is বাবা সাহেব তোমার দিকে। দীর্ঘদিন ধরে দেখছিলাম কিছু পতাকা পড়ে আছে, রোদ বৃষ্টি জলেও কোনো রং বদল হয়নি তার। পাশ দিয়ে যাওয়া জনতার ভ্রুক্ষেপে নই সেদিকে, অগত্যা উইয়ে ধরার ভয়ে কাঁধে তুলে যেই হাঁটতে শুরু করলাম, জনতার সওয়াল সেই থেকেই, আপনারা কেউ তুলছিলেন না তাই আমি তুলে নিলাম। এরপর দেখি একটা একটা করে সকলেই সে স্তূপ থেকে পতাকা কালে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। কে কোন দিকে যাবে প্রথমে বুঝতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়, কেউ কেউ ইতস্তত ঘুরতে থাকে, অবশেষে দেখা যায় সকলের গন্তব্য সেই একই দিকে। Thank you very much. Whisper into the ears of moonshine about the girl who counts the dark. Even the firefly knows the girl in the corner of the room. The deer are friends to the girl who breaks words. The clouds know of her hurt, the girl who is drenched in rain. She is the girl who swims against the current, her boat with its tettered sail in the autumnal storm. The girl who grinds the spices has the mortar and pestle for her companions. The spices knows her language, the ginger, the poppy, the chili, and the cumin. Fascinating the seams this together, girl whipping the sweat off the brow, lifting off the plow, the jaw in the dark. Short. Okay, thank you. I left the poetry of about Baba Sahib. Towards you, Baba Sahib. A very short one, half minute. In your direction, Baba Sahib. For long and long days I saw some flags lie. The color of them remained intact in shine and rain. The passers-by side did not look that way. Last terminate might damage. I perforce picked them on my shoulder, and as I started marching, people began to raise question. You people don't pick up, that's why I picked up. Then I say everyone picked a flag from their hip and starting marching with it on one's own shoulder, but knowing not which direction they should move it. They go scattered at first, moving here and there. At last it dawned
कल्याणी जी, लक्ष्मण गायकवाड़ जी, पी शिवकामी जी, कट्टीमणि जी, वीणा जी, आप सब। समय सीमित है और बात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे संक्षेप में। हाशिए का स्वर, पीड़ितों का उत्थान। अभी हाशिया की जब हम बात करते हैं तो मेरे सामने कुछ इसके पर्याय आते हैं, जैसे बहिष्कृत, अनटचेबल और वंचित, उत्पीड़ित, ये सब इसके पर्याय जैसे लगते हैं। और हाशिया क्या है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो अस्पृश्य समाज है, जिसे बहिष्कृत भारत कहा बाबा साहब ने, हर गांव में दक्षिण के कोने पर बसाया गया, गांव के हाशिए पर बसाया गया। इसकी सारी जद्दोजहद केंद्र में आने की रही, मुख्य धारा में आने की रही। संविधान की कोशिश भी यही रही कि सब मिल जाएं। आप देखेंगे कि जो गांव की संरचना है उसके उलट जब शहरों की संरचना हुई तो सरकारी आवासों की व्यवस्था ऐसे की गई कि जातियों के आधार पर वो अलग अलग ना हो। एक ही स्टोरी में अलग, हर फ्लोर में हो सकते हैं हम आपस में विभिन्न जातियों के लोग। अब प्रश्न ये है कि जिस समता के लिए, जिस बंधुता के लिए हमारा संविधान में व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी एबोलिशन किया गया, समाप्त की गई, और शिक्षित बनो बाबा साहब ने इसका एक आधार निकाला कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का एहसास नहीं कर सकता, अपनी स्थिति का भी एहसास नहीं कर सकता, और जो खुद अपनी आज़ादी के लिए कोशिश नहीं कर सकता वो सहानुभूति से कोई उसे आज़ादी दे नहीं सकता। और दी गई आज़ादी या कृपा करके उत्थान करने वालों की मर्जी है। या ये साहित्य में इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो सहानुभूति का साहित्य है और अनुभूति का साहित्य है, उसके अंतर पर तो बहुत बात होती रही है, लेकिन ख़ास बात यह है कि आप ज़बरदस्ती किसी से सहानुभूति ले नहीं सकते। ये उसकी मर्जी है कि आपके प्रति वो उदार हो ना हो, वो कब क्रूर हो जाए उसकी मर्जी है। तो सहानुभूति नहीं, अधिकार। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमको आप दया मत कीजिए, कृपा मत कीजिए, आप हमारे अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, वो हमको दीजिए। और ये मिले क्यों नहीं, सवाल ये है। आज स्वतंत्रता के 75वां हम मना ही रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस अमृत महोत्सव के समय में भी देश में जातियों का जहर पूरी तरह से फैला हुआ है। हम रोज़ घटनाएं इस तरह की सुनते हैं। किसी ने मूंछ रख ली तो हमला कर दिया, किसी ने पानी का नल छू लिया तो हमला कर दिया, हैं? कोई रास्ते में अपनी ठीक से अच्छे कपड़े पहनकर निकल गया तो उसके सिर में बालू डाल दिया। बलबीर माधोपुरी ने एक दिन मुझे एक घटना सुनाई, क्या वो, मैं उनके गांव में था और उन्होंने मुझे बताया। मैंने पूछा कि तुमने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तुम जब बाल काट कर निकलते थे तो तुम्हारे सिर में बालू डाल दिया जाता था, कौन डालता था? तो वो मुझे पकड़ के ले गए और बताया कि देखो ये घर है चौधरी का। तो मैं जब स्कूल जाता था और बाल ठीक से तेल वेल डाल के जब जाता था तो वो मिट्टी उठा के मेरे सिर में डाल देता था। तो ये तो छोटे छोटे नमूने हैं, लेकिन ये इस बात का संकेत देते हैं कि जातीय ईर्षा पली हुई है। कुछ लोग ये नहीं चाहते कि समानता है दूसरा। और
तो फिर इसका समाधान क्या है? जाति पाति तोड़ो मंडल, आप जानते ही हैं बाबा साहब के एनिलेशन द कास्ट और किताब है, और ये जो पंजाब का उनका भाषण है बहुत चर्चित है जाति पाति तोड़ो पर। उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जो वक्तव्य था और जिस कारण से वो वहाँ पढ़ा नहीं गया, उसमें 4 पंक्तियाँ ये थीं कि जब तक जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था धर्म का आधार लेती रहेगी, यानी ये धर्म द्वारा वर्ण व्यवस्था धर्म व्यवस्था है, ये प्रस्तावित जब तक रहेगा ग्रंथों में, तब तक ये समाप्त नहीं होगी। क्योंकि लोग बार बार ये हवाला देते रहेंगे कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अमुक जन्म से श्रेष्ठ है और अमुक जन्म से अश्रेष्ठ है या निम्न है। तो इसको निकालने की स्थिति में नहीं थे जाति पाति तोड़ो मंडल के संतराम बीए। अब हम इस पूरे दौर में साहित्य को देखते हैं और उसमें जब इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि समाज में ऐसे तत्व निश्चित तौर पर सक्रिय रहे कि जो बातें संविधान ने या संविधान निर्माताओं ने या बाबा साहब ने अपनी व्यक्तिगत राइटिंग में कहीं समता के लिए, उनके जस्ट अपोजिट क्रिया करता रहा समाज। जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो समाज में ऐसे तत्व सक्रिय हो गए कि किसी भी तरह इन्हें शिक्षित नहीं होने देना है। और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि दलित, आदिवासी या कोई गरीब अच्छी शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। तो जब शिक्षा अच्छी से मतलब समान एक तरह के स्कूल में भेजिए, जैसी भी है वही अच्छी हो जाएगी। 2 तरह की, 3 तरह की, 10 तरह की शिक्षा जो है वो अगर है तो वो, इसको बंद करता हूँ। तो हाँ, इसने थोड़ा डिस्टर्ब किया मुझे, लो इसको रख लो। अब साहित्य में हम देखते हैं कि बहुत लोग आए जिन्होंने सहानुभूति के तौर पर इस पीड़ा को दर्ज किया। दलित ही नहीं, गैर दलित भी आए। और चूँकि साहित्य का रिश्ता संवेदना से है, साहित्य का रिश्ता मानवीय गुणों से है, तो ये नहीं कह सकते कि पूरा समाज अमानवीय हो गया है। ये नहीं कह सकते कि जो दलित नहीं है वो मनुष्य नहीं है या वो ऐसा चाहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक उनकी संख्या बहुत कम है। एक समस्या वहाँ है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कही थी, वो ये है कि हर व्यक्ति की दृष्टि की एक सीमा होती है। जो जिसे नहीं जानता, जिसके बारे में वो चाहकर भी नहीं लिख सकता। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो बंगला वालों को शायद पता होगा, बंगला आगे बैठे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये बात पूछी गई थी एक बार कि आप इतने बड़े कवि हो गए, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, आपकी ख्याति सारे संसार में है, लेकिन आपने जो कुछ लिखा है तो वो तो बहुत संपन्न वर्ग के लोगों के लिए लिया है, खाते पीते लोगों के बारे में लिखा है। वो जो उत्पीड़ित तबका है, वंचित तबका है, गरीब है, अनटचेबल है, उन पर तो आपकी दृष्टि गई नहीं। और जब आपकी दृष्टि उधर नहीं गई तो ऐसा नहीं है कि हजारों साल ये लोग सोते ही रहेंगे, कभी तो जागेंगे। और जब जागेंगे तो प्रश्न करेंगे कि भाई हाँ, इतना बड़ा कवि था, राष्ट्र कवि था, हमारे बारे में उसने कुछ भी क्यों नहीं लिखा। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे होगा बड़ा, हमको क्या लेना देना, अपने घर का बड़ा होगा, हमारे तो आंगन में भी नहीं आया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यही सच है, मैं जिनके आंगन तक गया नहीं, जिनकी तकलीफ को मैंने जाना नहीं, उनके बारे में मैंने लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो सच नहीं होता। और मैं आंखें खोले, कान लगाए उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की तरफ देख रहा हूँ,
उन्हीं अस्पृश्य जो जो बहिष्कृत हैं उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ कि उनका कवि, उनका लेखक, उनका बुद्धिजीवी उन्हीं के बीच से आएगा जो सच बताएगा। तो ये बात जो टैगोर ने कही, इस बात को अगर हमारे साहित्य के तमाम लोग मान लें कि ये सच है कि हम किसी चीज़ को देखकर, कल्पना करके, अनुमान से अगर कहेंगे तो जिस पर गुजरी है, जिसने भोगा है, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती। और बलात् तुलना करके ज़बरदस्ती ये कहना कि नहीं तुमसे बेहतर हम लिखेंगे, ये अनाधिकार चेष्टा है, अनुचित है। और ऐसा हिंदी साहित्य में तो कई सालों तक होता रहा। वो बार बार ये कहते रहे, हमने खूब इस लड़ाई को दसियों साल तक झेला। दलित लेखकों के पास भाषा नहीं है, कला नहीं है, सौंदर्य नहीं है, अलंकार नहीं है, छंद नहीं है, ये क्या ऊट पटाक लिख रहे हैं। और ये सब नहीं है आपके पास, तो हमारे पास सब कुछ है, हम आपके बारे में आपसे बेहतर लिख देंगे, आप शांत बैठिए और पढ़िए हमें। तो ये जो है होता रहा काफ़ी समय तक। लेकिन सच यही है कि उन्होंने अनुमान से लिखा। और जैसा मैंने कहा कि जो उदार थे, मानवीय थे, उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से कि जब उस बारे में आप जानते नहीं, हो गया समय क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे देखिए वक्त का तकाजा है, बातें बहुत सारी हैं, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ यहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरी कुछ बातें सुनी। हो जाओ, ये फिर गएगा। ओके। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, जिसने भोगा नहीं उसने जाना नहीं। हमारे बात में गायकवाड़ जी बैठे हैं, विमुक्त और वंचित घुमंतु जाति की अब बात करते हैं। आपने शायद 1988 में उच्चल्या लिखा था, आपकी आत्मकथा है, और यहाँ हमें भरे मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सच उन्होंने 88 में लिखा था, 1988 में लिखा था, वो आज हमारे समय में ज़्यादा ताकत के साथ में मौजूद है, वो हमें ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। मैं गायकवाड़ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात कहें। आज के अंतर्देशीय साहित्य सम्मेलन के विषय पर आज के हाशियों का स्वर और उनका उत्पीड़न के बारे में मैं सीधा विषय की तरफ जाऊंगा। आज के प्रेसिडेंट हमारे के यूनुक जी, शिवकामी जी, बैचेन जी, ठाकुर मैडम और हमारे कट्टमनी जी, हरिराम मीना, टप्पो, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही अच्छा है और मैं चाहता हूं कि सीधे मैं विषय पर जाऊं, क्योंकि बेचैन ने खाली छिड़का दिया, उसका आवाज़ उठा दिया कि क्या हाशियों के बारे में या दलित के बारे में एक ही वर्ग हमारे देश में नहीं है। हाशियों के नीचे एक और एक तबका है, उसके नीचे एक तबका है जिसका उत्पीड़न साहित्य में भी नहीं आता और वहाँ लेखक जा भी नहीं सकता। ऐसी जनजाति हमारे भारत में है जो आज भी अनदेखा किया जाता है, और मैं उसी के ऊपर लिखने वाला शायद भारत का पहला गुनहगार जमाती। क्या एक लड़के ने गुनाह किया कि उसने साहित्य लिखा, और ये गुनहगार को आज आप यहाँ हमें एक मौका दिया, इसलिए साहित्य अकादमी का हमेशा आभार मानता हूँ कि उनके वजह से कम हम बोल तो पा लेते हैं। दोस्तों, मैं इस विषय पे जाऊंगा कि बैचेन जी अछूत, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कुछ अछूत के बारे में काम किया, ठक्कर बापा ने आदिवासियों के बारे में काम किया। अछूत के लिए हमारे भारत में हर गांव में एक जगह है, चाहे बहिष्कृत वाड़ा हो, लेकिन है वाड़ा तो अस्तित्व है।
जंगल में पाड़ा है, जंगल है, माटी पानी के लिए झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये भारत में आज भी अनदेखा एक ऐसा तबका है जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स है। 1871 के कानून के तहत भारत में पहली बार अंग्रेज ने कानून लाया कि माँ के पेट से पैदा होता ही एक बच्चा पैदा होता है, वो क्रिमिनल बोल के, गुनहगार बोल के ही पैदा होता है। ऐसी कौम भारत में 15 करोड़ लोग आज भी है जिनको हम सिटीजनशिप नहीं दिया है, जिसको नागरिक नहीं बोलते हैं, जिसका बर्थ प्लेस नहीं है। हु इज बर्थ प्लेस इन इंडिया? डीनोटिफाइड ट्राइब, नो। हमारे देश में मैं उत्पीड़न के बारे में बोलूंगा, अरे यारो ये देश मेरा है, सारे भारतीय मेरे हैं, सब मेरे भाई है। अरे कहाँ है? आज भी उस बस्ती में कोई नहीं जाता, एक जगह इनको रुकने नहीं दिया जाता। अभी पंढरपुर में मेला हुआ महाराष्ट्र में, विट्ठल के दर्शन को लोग जा रहे थे, तो वो हमारे क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग वहाँ जा रहे थे, भगवान के पास तो न्याय मिलेगा, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको रोका और 400 लोगों के, बच्चों के, वाइफ, महिलाएं और पुरुष, स्कूल के बच्चे, सबको अरेस्ट कर दिया और उनको अंदर डाला। 400 लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे 2 बार कलेक्टर को फोन करना पड़ा कि भाई आज़ादी का 75वां साल मना रहे हो, अमृत महोत्सव मना रहे हो, और आज भी जाति के आधार पर तुमने 400 महिलाओं को, बच्चों को अरेस्ट करके रखा है। ये क्या देश की आज़ादी है? आज ये उत्पीड़न सबसे बड़ा है कि इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। भले अंग्रेज ने हमें लिए कानून बनाया, लेकिन अंग्रेज ने फिर भी हमारे एजुकेशन के लिए, सुविधा के लिए 1913 में संविधान में प्रावधान किया था अंग्रेजों के कि इनकी सुधार के लिए कोई बजट हम लाए, और वो बजट उस समय बना। यानी पहला ट्राइब्स कौन है? तो ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, गुनहगार जमात, उनके लिए पहला बजट हुआ। और आज़ादी के बाद आपको यकीनन मैं कहूँगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप स्टडी कर सकते हैं कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिला इस देश में। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। हमें आज़ादी मिली 31 अगस्त 1952 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम मुक्त है, लेकिन आप लोग आज से विशेष मुक्त इसलिए है कि आपने आज़ादी की जंग लड़ी, इसलिए आप गुनहगार जमात है। आज से गुनहगार नहीं, नोटिफाइड नहीं तो डीनोटिफाइड हो, यानी वो नोटिफाइड को डीनोटिफाइड किया, उसको हम आज विमुक्त बोलते हैं, लेकिन कोई विमुक्त नहीं है। आज भी हम संविधान का हिस्सा इस देश में नहीं है, क्योंकि 1950 में संविधान भारत का बना, और भारत के संविधान के 5 साल 16 दिन के बाद ये लोगों को आज़ादी दी गई, इसलिए ये संविधान में लोग नहीं आए। आज भारत में सबसे बड़ा हकदार आज भी इस गांव से बाहर है। क्या उसके बारे में साहित्य में कुछ सोचने वाला है? आज अभी बेचैन जी बोल रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अपने लोगों के बारे में लिखा। हमारे भी साहित्य के वैसा ही बंटवारा हुआ है। जो आता है साहित्य में, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक आटपाट नगर था, और वो एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था, और उसको बच्चों को दूध पीने को नहीं था, तो वो जो आटा होता है, आटे का दूध पिलाया। अरे आटे का दूध छोड़ो, हमें पानी पीने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर आज भी जाना पड़ता है, हमें पानी नहीं मिलता। दूध की तो बात अलग। उसके बारे में साहित्य में कोई जानकारी नहीं। पहली बार हम लिखने लगे, अभी हमारे सामने कट्टमनी बैठे हैं, अमरकंटक में कितना बड़ा काम किया है, उनका साहित्य पढ़ने लगा तो ये भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स है। खाली लोगों ने हमें, आज देश में इतना बड़ा शोषण, हम किसको मांगने जा रहे? जो अंग्रेज से दोस्ती करते थे वही आमिर है। फिर बाद में मुगल आए, मुगल के साथ भी जो रहते थे, बहुत मजे में रहते थे, वही लोग आज सत्ता में है। जो अंग्रेज के साथ दोस्ती करते थे वही सत्ता में है। जो हमको सताने का काम करते थे वही आज सत्ताधीश है।
मांगे तो किसके पास मांगे? आज ही हम संविधान के बाहर बाहर है। लक्ष्मण गायकवाड़ भारत का आज प्रथम सिटीजन नहीं है, हम सेकंड सिटीजन लोग हैं, क्योंकि हमें कोई अधिकार इस देश में संविधान में नहीं मिला है। दोस्तों, ऐसे भारत के आज 25 करोड़ लोग हैं जो गांव गन्ने में नहीं आते, जिनको बर्थ प्लेस नहीं है, गांव नहीं है, या ऐसे लोगों का साहित्य आज लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मैं आपका एक लास्ट में उदाहरण दूंगा कि हम वो लेखक है कि मैंने मेरे बिरादरी के बारे में लिखा कि चूहे कैसे खाते थे, खरगोश कैसे मारते थे। आज वो जंगल भी हमारे हाथ से निकल गया। अभी तो जंगल भी ना जा सकते, ना गांव में रह सकते। अरे रहे तो कहाँ, ये सबसे बड़ी मुसीबत हमारी है कि हमें रहने के लिए। और जब मैंने लिखा तो लिखने के बाद मेरे गांव के लोगों की पंचायत बैठी, और पंचायत में क्या तय हुआ कि लक्ष्मण गायकवाड़ बिगड़ गया, और इसलिए बिगड़ गया कि साला इसको राजीव गांधी ने इसको 1 लाख रुपया दिया, और इसलिए बख्शिश दिया कि इसने अपना सब सीक्रेट गवर्नमेंट को बेच दिया। इसलिए बेचने के बाद उसको 1 लाख रुपया मिला। तो वो 1 लाख के ऊपर हक मांगने के लिए न जाने कितने लोग मेरे घर पे आने लगे कि भाई वो ये तुम्हारा पैसा जो मिला है, हमारा धंधा बंद हो गया है, और चोरी कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, सब आपने गवर्नमेंट को बेच दिया है। अभी हम जिए तो कैसा जिए? तो आपके पास का जो पैसा है उसमें बंटवारा करो, क्योंकि हमारी ये आदत ये है कि शिकार किए तो भी बांट के खाओ, पैसा चोरी किया तो उसका बंटवारा हो, और ये कहता सुअर काट के खाए तो भी उसका बंटवारा हो। अगर आपको पुरस्कार गवर्नमेंट ने दिया तो उसका बंटवारा क्यों न हो? इसीलिए मुझे गांव छोड़ना पड़ा। ये मेन स्ट्रीम इतनी भयानक है दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम में पहुंचना आज दलितों का, अछूतों का और ट्राइबल लोगों का बिल्कुल काम नहीं। ये वही लोग पहुंच सकते हैं। अरे भाई, मैं तो बोलता हूं, रोटी के लिए आज भी अगर चोरी कर रहा है तो वो इंसान चोर नहीं मानता मैं। जो रोटी चुरा कर अपने घर में दबा दबा के रख रहे हैं और रोटी मिलना मुश्किल कर रहे हैं, वो देश और वो समाज गुनहगार है जो रोटी के लिए चोरी करने को मजबूर कर रहा है। ये हमारी हकीकत है। जब तक हम ये उत्पीड़न के लोगों के बारे में, हाशियों के नीचे तबके के नीचे तबका है जिसको मसंदूगी, जो शमशान भूमि में हम उनके बारे में लिखते हैं। शमशान भूमि में आज भी एक ऐसी कौम है भारत में और महाराष्ट्र में कि वो जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उस पे उसका अधिकार होता है। आपने कभी सुना है ये इसके बारे में मैंने कहानी लिखी थी कि गांव में आते हैं तो गांव उसको गांव आने नहीं देता, तो शमशान भूमि में रहना पड़ता है। और वो शमशान भूमि में वो प्रार्थना करता है शिव की। वो बोलता है भाई कोई जिंदगी हुई वाली औरत मरना और उसके हाथ के अंदर सोने की बांगड़ी होना है, और कोई ऐसा आमिर बुड्ढा मरे कि जिसके सोने के दांत हो, और वो उसको मरने के बाद यहाँ लाए और उसको जलाते समय हम निकाल ले और उसी के ऊपर गुजारा करें। ये देश है हमारा। तो दोस्तों, मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमको बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कल राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी तो हम नाच गाना कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। मैं बोलता हूँ इसको छोड़ दो, नकार दो, और फिर से एक नई लड़ाई हम आदिवासी और हंसियाँ के ऐसी करेंगे कि सब लोग शहर में आएंगे, जंगल छोड़ेंगे, नाच गाना तोड़ देंगे। अभी ये संस्कृति अब मेन स्ट्रीम वालों को दे देंगे और उनकी संस्कृति हम छीन के लेंगे और ये गांव में बसेंगे और इनको जरा जंगल में भाग देंगे। तब मुझे लगता है समता, स्वातंत्र्य, बंधुता का सही नारा होगा। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। हमने जाना आपके उद्बोधन से कि जो समाज मिल बांटकर जीने का आदी था उसके हक को एक समाज खाकर बैठ गया। हमारी ऊंची अट्टालिकाओं ने किसी के सूरज को दफन कर लिया। हम जब ऐसी आवाज़ सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो
आईएएस है जो स्टिल बॉडी कही जाती है, उनकी बात तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनी ही जाती होगी। क्या उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है? मुझे लगता है शिवकामी जी इस बारे में बात करने के लिए बेहद उपयुक्त हैं। मैं सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। Friends, I am very glad to be part of this panel today. At the outset, I would like to pay my regards to Mr. Enoch, who chairs the session, and co-panelists Lakshman, Kalyan, and Singh. And Professor Katimani is here, Mr. Bala is here, and famous documentary producer, filmmaker, Ravi Subramaniam is here. So it's really a pleasure to be part of this session. At the outset, I would like to raise questions about, margin. What constitutes marginality? And if I say the economic conditions or poverty conditions constitute marginality, I may agree, but some of my friends may not agree, because they will say that they are also poor and they want to get reservation. And in Tamil Nadu, 69% reservation is already existing, and with the reservation for forward caste, the reservation is 79%, out of which what you call margin takes only 18%, and 1% Adivasi. So whether economic conditions constitute marginality, I leave it to you, but if they are also in the margin, they should be also called here to explain how they are marginalized anyway. But if marginality is defined because of the population and the Adivasis and Dalits in India, and leaving apart the converted Christians, they themselves constitute 25% of the population. The 25% of the population will constitute, marginality, so I really doubt. And if you say the feudal conditions and the relationship between caste population and the Dalits constitute marginality, I will say double yes. But again, there is a politician in Tamil Nadu, he says there is no caste in the cities. The situation has changed for the better. And he is taking out a campaign for the prevention of, against the implementation of Prevention of Atrocities Act. His name is Ram Das. He's Anbu Mani's father. So that way you can understand better. So on every ground, marginality needs to be revisited. And Professor Enoch in his introduction said, in a paper, the margin is plain and blank, and he said, I want to add one more thing. Whatever in the main text there are mistakes that are pointed out in the margin. If there is any correction needed, that is pointed out in the margin. If you have any questions, in the margin. And also the rating is also on the margin. So you put, mark. So we are the markers of the society. So that way, and if you accept there is a margin, you have to also accept there is a mainstream. So the relationship has to be explained. And margin and mainstream, sometimes people try to explain it in a cultural and religious context. It may be true, but if they are of different faiths, if they are of different culture, why can't they allow them a parallel existence instead of a marginal existence? So that way, I don't want to be in the margin, but I want to be in the margin because there are few people who are passionate about creating a casteless society. So I want to be in the margin with them.
And also, there are some people, they are interested in amalgamating all the culture and making into one single thing. And I would like to raise a question. Are we part of the exploitative culture of the mainstream? So I don't want to be part of the margin that, want to be amalgamated with the mainstream. So with this little introduction, I would like to say what has happened in the past 75 years, because my studies are limited to Tamil Nadu, so kindly bear with me. Because I have examples in every field. There is no time for me to explain each and everything, but I will limit myself, one or two examples here and there. So in politics, how are we marginalized? The Constitution provides reservation. The 44 out of 235 constituencies in Tamil Nadu, 44 are allotted to the Dalits. And out of which, the cabinet is formed. The cabinet allocates only 2 to 3 ministers every time. Even the Dravidian model accommodates only 3 ministers this time. And even among them, there is seniority. So the Dalit ministers come at the last. And Kayal Vidi is the minister who holds the portfolio of Adi Dravidar welfare. She comes at last in seniority. What is so wrong about seniority? Because the other ministers need not listen to her. Suppose she sends her file for signature concerning certain projects to Adi Dravidan tribal, they have the power to deny it. So that way the seniority really matters. And of course I can talk about politics a lot, but there is very little time. As far as the field of economics is concerned, the central government has clearly indicated that proportionate funds should be allotted according to the population of the Dalits, and they should implement schemes related to the Dalits and Adivasis. Adivasi plan is separate. This is called the special component plan and tribal sub-plan. But this plan was hatched because 25 years, the benefits of 5-year planning could not reach the Dalits. So they prepared this scheme so that it can reach directly the Dalits. So after another 50 years, we are still fighting for the proper implementation of the special component plan. And we wanted an appointment with Mr. PTR, the then finance minister of Tamil Nadu. I think he postponed it till he got transferred from his portfolio. And also, the government had, either the central government or the state government has so far, thought about the landless Dalits who form the majority among the landless agricultural laborers. So if only they thought about it, they would have given a piece of land. Like Kerala, Namboodiripad has given 10 cents around the house. It's called the homestead land. We have been fighting for it. We have not stopped it. But in literature, of course, because most of the people who have come to write are from the intelligentsia or educated, and they don't pay much. And also there is a habit, because what you start talking in the, initially, you continue it till your death. That's what I feel, because most of the literature talk about, of course, landlessness a little bit, but the protests or demonstrations relating to reservations are more than asking for a piece of land. So that way, the rise of the oppressed is maybe whatever the constitutional benefits that we have received, but not some of the benefits from the mainstream schemes. So socially, I feel the village still has a separate existence geographically. Our literature could not change the physical structure of a village. The Dalits are like, thrown away subjects or objects in the periphery of the village. Any village
they contribute in the margin. So they really live in the margin as far as the villages are concerned, and they have no access to common property resources like river and other irrigation sources, because they don't have the land. How would they access those, and what's the benefit if they access it? So they are kept away from agriculture, which is the major industry in India. And culturally speaking, literature, of course, there are more than 100 writers in Tamil among Dalits. That's a very welcome thing. And out of them, 3 have been honored with the Sahitya Academy. But there is a common thing between the 3. What is common is that all the 3, they don't wear the Dalit tag. So they call themselves, the literature is free from caste. So Sahitya Academy has recognized only them. So I don't want to blame Sahitya Academy, but it's a time that I want to mention and bring it to their notice. In the field of cinema, it's very interesting. There are some interesting films have come out. One is Jai Bhim. It was subtitled in English. You must have seen it. But the most prominent are Karnan and Mamannan, which has been released now, Asuran, and earlier Pariyerum Perumal. These are the 3 directors, very important directors, Pa Ranjit, Mari Selvaraj, and Vetri Maran. These are the 3 new directors, and it's really, kind of help the Dalits to grow, and a lot of musicians also coming out of, the really rural areas. So this is very interesting to note. But again, when I discuss this with my fellow, walking partner, so we usually talk about movies, right? So he said, oh, again and again, you're taking on caste. I said, it's sickening, he said. I said, okay, it's true, it's sickening. But imagine, you are finding it to see it, it's sickening. But I'm living it. How sickening it could be, I told him. So I end with this. Thank you very much. थैंक यू जी हाँ थैंक यू मैम। जैसा कि आपने कहा कि समाज में ये नकार जाने लगा है कि जातियाँ है ही नहीं, लेकिन शायद यही सबसे सही वक्त है जब जातियों को तोड़ने की बात करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है कि आजकल आप नोटबुक देखते होंगे जिस पर मार्जिन हाशिया होता था, वो गायब हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज से भी जो हाशिए पर लोग हैं ये मुख्य धारा में आ जाएं। अंतिम अध्यक्ष उद्बोधन के लिए 2 मिनट सर के लिए। I thank all the people who are present here, and I thank them for the patiently. Srimati Kalyani Thakur was interested in giving us the brief history of Bengali Dalit literature, and she also read a good poem. Shiroz Singh Bechan wanted to say Sanubhuti and Sahanubhuti, which would we claim for Dalit literature, and his poetics are comprehensive and applicable to Dalit literature too. Lakshman Gaikwad says there are layers of discrimination even in Dalits, and the denotified people are still suffering under the aegis of the system for food, shelter, and clothing. I'm happy Dr. P. Sivakami could deal with the Tamil Nadu system and mostly agriculture where these people are present. And I'm happy she could add to what I said about the Dalit so-called margins.
The entire program is well conceived, well organized, and well executed. I thank all the four panelists for their well prepared documents. I also feel happy to congratulate senior people like Professor Sridhar Balan, Professor Katamani ji, Professor H.S. Sivaprakash, and Srinivas Rao, and many people who are present here for the program. It's a good thing that you are all here and you had patient listening. And we are benefited by all the five. We are benefited by your presence, and I thank you all of you here and also the Sahitya Academy, which could do a wonderful program on the Dalit literature. Thank you very much. थैंक यू सर। हम अभी 12 बजे बाद फिर यहाँ एकत्रित होंगे और ई लिटरेचर पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।